Okay, you all of you are on the right track. Okay, ठीक है बेटा. So we will discuss this. I'll just open up the chart and show you. But before we go into it, let me give you a warning that this is a highly impractical question. As far as you see practical chart work is concerned, this is not practical at all. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बनाया गया है. प्रैक्टिकली इफ़ यू सी इट कैन नॉट बी दिस काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम अकरिंग ऑन बोर्ड. So he is just asking you what course have you steered. So that will be known in any case to the navigator what course he has been steering. So one, it is not practical at all. And ऐसे ही क्वेश्चन सर ब्लाइंड नेविगेशन का भी होता है सर. उसमें तो वो 15-15 नॉट पे चलाते हैं जहाज को रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी के केस में सर. वैसे तो वो भी होता है सर एक. okay, we'll do blind navigation also. So दूसरा बेटा इसमें इन्होंने एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया हुआ है. सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. इट विल कम एक्चुअली ए लिटिल लेटर, बट इफ यू पीपल से वी कैन डू इट नाउ, यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ ऑल्सो. सो वुड यू लाइक टू? जरूरी नहीं है, अगर बाद में हो तो बाद में कर लेंगे, मतलब अगर ज्यादा टफ है तो. Whatever you guys say. सर अभी करना है. ओके, ठीक है बेटा. तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, ध्यान से समझना. और इसको देख के डिसहार्टन नहीं हो जाना कि ये क्वेश्चन जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया है, कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, सोल्यूशन कैसे मिलेगा. धीरे धीरे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करते जाओगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. ओके, सो जस्ट stay with me and follow the solution, and don't worry unnecessarily that we have not been able to solve it. धीरे धीरे जैसे जैसे हम और आगे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, you will be able to handle these questions. So what I'll do for today is I will just solve this question, and we will stop our session for that here. For today, let's see this question. Okay, so the question says at 1800 hours, Calday lighthouse was bearing 070 and Stockpole head was bearing 250 compass. So इस statement से क्या पता चलता है बेटा? both lighthouse having opposite bearings. सर कहीं ऊपर सर इन दोनों लाइट की कहीं वो शिप. Very good. So this is a concept of the horizontal angle being 180 degrees. So 180 degrees or reciprocal bearing concept है ये, and it will give us a position line straight away. ये तो पहला concept है. So let's identify these points on the chart. We have this chart open here. This is the Calday light beta, Calday Island light, and जो ये Stockpole head की बात कर रहे हैं, can you see this beta on the screen? Yes sir. Stockpole head, is it visible? Yes sir. Okay, very good. So this is the second object which they are talking about. Then later on they are also talking about Helvig light vessel. So let me show you where this light vessel is. Helvig light vessel is here. Okay बेटा, तीनों चीजें identified on the chart. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई हैं. बिफोर वी स्टार्टेड डूइंग अवर असाइनमेंट, मैंने आपको चार्ट वर्क क्वेश्चंस का एक मेथड बताया था 1 2 3. डू यू रिमेंबर? यस सर. व्हाट वाज दैट? सर पहले
फिर अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फिर उसका रफ डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद बाकी कैलकुलेशन, फार्मूला, टेबल कौन सा यूज होगा, ये सब। Very good, beta. So I'm going to follow that method here. So 1 to 3, we will first understand this question, and then I'm going to make a rough diagram. And from the rough diagram, let's see if we can get a lead how the question is to be solved. So let me start. अब देखो बेटा, सबसे पहले तो कैल्डेलाइट एंड स्टैक पोल हेड, they are on reciprocal bearings. So this tells me that if I draw a line joining both of them, that is stack pole and Calde. So what is this line, beta? Transit. Position line for Yeah. 1800 hour. Very good. This is 1800 hours PL. So let me write it here, 1800 hours PL. Okay. Now the vessel is somewhere on this line. It could be anywhere. We don't know where it is. We have to find that. And what we know is the vessel is somewhere on this line. Right, beta? What I do now is I pick up any arbitrary point on this line. I'm making a rough diagram as of now. Once the rough diagram is made, then I will do the final plotting. So for the sake of rough diagram, I'm picking up any one position here on this particular line. Let's say I have picked up this position. Let's name it as A. I have assumed for the moment that A is my 1800 position. You can pick up A anywhere on this line, any part of the line of your choice. So the question says that at this time, Helvig light vessel was 30 degree on the port bow. So this is Helvig light vessel here. So let me join point A with Helvig light vessel. So this is basically the bearing line of the Helvig light vessel, and it is 30 degree on my port bow. So that means 30 degree from this line should be my heading. The heading should be this way. What is this angle? This angle is 30 degrees. Again, reminding you, this is a rough diagram, beta. I'm just making the rough diagram to get a lead into the question. So up to here, everybody okay? Yes, sir. Okay, very good. Now let's go further. From 1800 hours, vessel sailed on a certain course. We have drawn the course line here. We don't know what this course is because A is an arbitrary position. This is a rough diagram. The vessel steered a certain course at a speed of 16 knots. So my speed is 16 knots. So I know my speed is 16. At 1830 hours, Helvig light vessel was 60 degree on the port bow. So Helvig light vessel is 60 degree on the port bow. Let's assume that at 1800 hours, the vessel is here. Sorry, 1830 hours, the vessel is here. Let me name it as B. At 1800, Helvig light vessel is 60 degree on the port bow. So let me draw the bearing of the Helvig light vessel. And this angle is 60 degrees. So up to here, everybody okay, beta?
Yes, sir. Okay. Now further the question says, find the true course steered and the position of the ship at 1800 hours. So we need to find the CTS and the fix. So now I have all the information which was there given in the question. I have it plotted on my chart. So let's open up the chart a little bit. I'm going to maximize it. So this is the scenario, beta. B is 1830 position. So let me mark 1830 here. A is 1800 position. Let me mark 1800 here. And this is again reminding you a rough diagram only for the purpose of getting a lead into the question. This is my course steered line. This is Helvig light vessel. Up to here, everybody okay, beta? Any doubts up to here? No, sir. Yes, sir. Okay. Very good. Now, beta, if this angle is 60 degree, can you tell me what will be the inner angle? 120. Very good. It will be 120. And if this is 120, can you tell me what will be this angle? 30 degrees. 30. 30. 20. Very good. Total has to be 180. So this angle is 30 degrees. Let's call Helvig light vessel as H. So ABH is a special triangle. What is the speciality? Isosceles triangle. Very good. So that means this side should be equal to this side. Two angles are equal. This angle is 30 degree, angle A. Angle H is also 30. So the sides opposite to them should also be the same. Okay, beta, up to here, everybody okay? Okay. Yes, sir. Very good. Now, beta, with a speed of 16 knots, how much distance are we going to travel in half an hour? 8 knots. 8 mile. 8 miles. So that means A to B should be 8 miles. If A to B is 8 mile, what will be BH, Bravo Hotel? Same, 8 sir. miles. 8 miles. 8 miles. Very good. It will also be 8 miles. Now what I do is, from point H, I drop a perpendicular onto my course steered line. This is a perpendicular. Let me call this as point C. Now, beta, have a good look at this triangle HBC. This angle is 60 degree. Side BH is 8 miles. Is there a way that we can find out side CH? The red color side? Sin Yes. 60. Yes, sir. Yes, sir. Sin 60. Very good. 8 Very cos good. 60 degrees, sir. So very good. Cos or sine, beta? Sin, sir. Sin. Sin. Very good. So just punch in the numbers in your calculator and tell me what is side CH. 6.9. Very good. So this side is 6.9 miles. Up to here, any doubt in anybody's mind, beta? No, sir. Very good. So we know the side Charlie Hotel CH is 6.9 miles. Now what you do, beta? Look at this bigger triangle, that is Alpha Hotel Charlie.
AHC. Now this is a right angle triangle AHC. We know side CH, it is 6.9 miles, and we know angle A, it is 30 degrees. So is there a way we can find out side AH, Alpha Hotel? Yes, sir. Yes, sir. 30. Very good. So just punch in the numbers in the calculator. Tell me what is side AH? $13.8, sir. 13.8. Yeah. Okay, beta. Very good. Any doubt up to here, beta, in anybody's mind? No, sir. This is basically sine 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 6.9. Hypotenuse is Alpha Hotel. So we get the hypotenuse 13.8 miles. So now beta, ये सारा काम हमने रफ में किया है. Now once this is done, now we can plot the question easily. So अब हमने क्या करना है, हमने चार्ट पे जाना है. सबसे पहले तो let us call this as PQ. सबसे पहले तो ये PQ लाइन को ड्रॉ कर देना है. So PQ line is our 1800 PL. You can plot PQ on the chart. सर इसको ट्रू में करके करेंगे ना, कंपास में दिया है. बेटा इसमें आपने बियरिंग तो देखनी ही नहीं ना, आपने तो पैरेलल रूलर उठाना है, स्टैक पोल हेड और कैल्डे लाइट को ज्वाइन करना है पेंसिल के साथ. फॉरगेट अबाउट द बियरिंग, बियरिंग को हमने देखना ही नहीं है. ओके, 1800 PL plotted on the chart, beta. Very good. Now you have to follow step number 2. Now you have to pick up your compass, open it up 13.8 miles, center it on Helvik and draw an arc. ये जो आर्क है बेटा, ये आपके PL को किसी पॉइंट पे कट करेगी. जिस पॉइंट पे ये आपकी PL को कट करेगी, that is your 1800 fix. ओके सर. आ गई बेटा, 1800 की फिक्स आ गई. हाँ जी सर. Very good. So now the further procedure is pretty simple. Once you have the 1800 fix, Yes. you can draw line AH. Right, AH line आप draw कर लो. That will give you the bearing of the Helvik light vessel at 1800 hours. So 30 Add 30 degrees to it and you get your CTS. So these two things which they had asked, ये दोनों की दोनों हमने find कर लिए. Right, beta? Yes, Have sir. a good sir. look. Okay, sir. Have a good look at the plot and let me know if you have any doubts anywhere, beta. ओके, वेरी गुड. सो जैसा मैंने पहले बोला था, इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है. Once you see the solution of these type of questions, तो धीरे धीरे आपके माइंड में भी ये solutions जो हैं आने लगेंगे. The only thing to do from your side is practice. So अब आपने इस क्वेश्चन को, जो आपकी चार्ट वर्क की नोटबुक है, उसमें नोट कर लेना है और नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को चार्ट पे प्लॉट कर लेना है एंड प्लॉट करके आंसर्स लिख लेने हैं.
make this rough diagram in your notebook also, so that later on, whenever you are revising and this question bothers you, you know this is the way it has to be solved. जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक नॉन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. This kind of situation will never happen on the bridge of a ship, and it is basically made up using trigonometry. इसमें चार्ट वर्क तो कोई ज़्यादा है नहीं बेटा, इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को डाला हुआ है, just to check your trigonometry concepts. That's all. सर ये जो हम लोगों ने कोर्स टू स्टेयर निकाला ये भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाला है क्या फिर? नहीं बेटा, ये तो बड़ा सिंपल है. Once you have the 1800 position known to you, A point आपको चार्ट पे मिल गया, just join AH. ये जो AH लाइन है, it will give you the bearing of Helvig light. और जैसे ही आपको Helvig light की bearing मिली, उसमें 30 डिग्री ऐड कर दो, आपको अपना CTS मिल जाएगा. ओके, थैंक यू. So no trigonometry, only a addition of 30 degrees to get the CTS. Okay बेटा, clear? यस सर. क्लियर सर. तो ज्यादा लोड तो नहीं आया बेटा दिमाग पे? नो सर. नहीं सर. वेरी गुड, ग्रेट. सो आज बेटा सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं. So do this question on the chart, do it in your notebook, and next time when we meet, we will pick up the two new topics, the phase 1 topics which we have, raising a lighthouse right ahead, and the second one is blind navigation or steering safe courses. ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अगर आपकी असाइनमेंट 3 में भी कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, प्लीज कंप्लीट देम आल्सो. सर एक डाउट था. बोलो बेटा. अगर हॉरिजॉन्टल एंगल वो 90 डिग्री आता है तो वी हैव टू बाइसेक्ट द लाइन, और वो जो लाइन आएगी उस पे हमारा पीएल, वो लाइन पीएल बनेगी? नहीं बेटा, नहीं. Yes. आपने बाइसेक्ट भी नहीं करना है. हाँ जी. अगर आपका हॉरिजॉन्टल एंगल 90 आता है तो आपने सबसे पहले तो बेस लाइन को ड्रॉ करना है. हाँ जी. बेस लाइन मीन्स ज्वाइनिंग बोथ द लाइट्स. यस यस सर. राइट बेटा. ओके. फिर आपने वो जो लाइन आपके पास आई है ज्वाइनिंग बोथ द लाइट्स, उसका मिड पॉइंट स्केल से मेजर करके निकालना है. ठीक है सर. ओके. दैट मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल. ओके ओके सर. ओके, ठीक है ठीक है. ओके, अंडरस्टूड. ओके. और सर ये जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन बताया था नंबर 2, क्या सर उसको ऐसे डायरेक्टली हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं जैसे पे करते हैं कि हम स्टीयर कर रहे हैं कोर्स सपोज 075 और CMG हमारा 080 है, तो सेम वैसे डिफरेंस लेके डायरेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं या फिर पूरा प्रोसीजर दिखाना पड़ेगा हम लोग को? आई डिडंट गेट यू बेटा, एक बार फिर से पूछो. सर जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 3 पॉइंट बेयरिंग वाले क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, तो ऑलरेडी हमको CMG तो वहां से फाइंड आउट हो गया और कोर्स स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वी नो द डिफरेंस बिटवीन देम. राइट. और नेक्स्ट में ये बोलता है कि अगर हमको 073 कोर्स में इंक्लूड करना है, सो व्हाट कोर्स वी स्टीयर. तो सर जो वहां से डिफरेंस आया है वो डायरेक्ट हम लोग इसके ऊपर लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये जो डिफरेंस है ना, it will change depending upon the courses which you are steering. It is going to change. ये permanent difference नहीं है. Yes sir, but क्वेश्चन में all these parameters are the same. जो हम लोग पहले किए वो सब तो सेम ही है ना. पैरामीटर कुछ चेंज तो नहीं कर रहा पैरामीटर में? नहीं बेटा, चेंज कर रहा है. आपका CMG पहले कुछ और था, पर 2040 के बाद CMG बदलेगा, 2040 के बाद CTS भी बदलेगा. So triangle सेम नहीं रहेगी. The triangle is going to change. Yes sir. ओके. करंट वेक्टर सेम है दोनों केसेस में, करंट वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, बट CTS CMG दोनों चेंज हो रहे हैं. सो द डिफरेंस इज गोइंग टू चेंज. ओके. हाँ जी सर. डायरेक्ट माइनस भी कर लो तब भी अलग ही आता है सर आंसर, डिफरेंस ही आता है.
ना बेटा नहीं डिफरेंस ही आता है मैम सर, डिफरेंस ही होता है, वो तो आएगा ही, डिफरेंस ही आता है। बट बेटा इस केस में प्रैक्टिकली देयर मे बी वेरी लिटिल डिफरेंस इन CTS एंड CMG, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो चेंज। बट व्हेनेवर द CTS और CMG चेंजेस, द ट्रायंगल चेंजेस, तो ये डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, इसमें चेंज आएगा। सो क्वेश्चन पेपर में आपने ये डिफरेंस नहीं लगाना है, आपने नई ट्रायंगल बनानी है। हाँ जी ठीक है सर। ओके 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 बेटा।